Hello students, welcome to the Slate class of physics. As you know that we are continuing with the chapter of kinematics. In this class we will study the concept of acceleration and types of acceleration. Right? One of the type of acceleration is deceleration. We will also study that in this class. Now, looking at this diagram on the top right corner, these are the two pedals of car, right? This one is brake and this one is called accelerator, right? Now what is meaning of accelerator? जब आप इस पैडल को प्रेस करते हैं तो आपकी कार की स्पीड इंक्रीज होती है, इनफैक्ट कार एक्सेलरेट करती है. So simply the meaning of acceleration is increase in speed with respect to time. So what is acceleration? Acceleration is generally change in velocity with respect to time. So, acceleration is change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time. This change could be in the form of increase in velocity or it could be in the form of decrease in velocity. Right? Okay. अगर आप एक और डेफिनेशन लिखना चाहें, the other definition is rate of change of velocity. Rate of change of velocity. राइट? अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पर्सन अपने फुट से एक्सेलरेटर को प्रेस कर रहा है और कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब है कार एक्सेलरेट हो रही है. अच्छा, अब लेट सपोज कार की स्पीड है, इनिशियल स्पीड है 0 मीटर्स पर सेकेंड, राइट? आफ्टर 1 सेकेंड हिज स्पीड इज 4 मीटर्स पर सेकेंड. सो 1 सेकेंड में ये सारा कुछ हुआ. 1 सेकेंड में स्पीड हैज इंक्रीज्ड बाय 4 meters per second, so his acceleration will be 4 meters per second square, right? Acha, now what is the formula of acceleration? The formula of acceleration is v minus u divided by t. Acceleration is equal to v minus u divided by t, where a is acceleration, v is final velocity, u is initial velocity, and t is time taken, right? What is the SI unit of acceleration? SI unit of acceleration is meters per second square, or you can write it as ms minus 2. So मैं आपके सामने एक situation place कर रहा हूं. The situation is a person has initial velocity of 0 meters per second, final velocity of 12 meters per second, and time is 3 seconds. What is his acceleration? You will simply substitute the values in the calculator. आप लिखेंगे acceleration is equal to v minus u over t. Don't forget to write the formula. Formula लिखने के बहुत ज़्यादा importance है. Final velocity is 12, initial velocity is 0, and he is taking time of 3 seconds. From here, the acceleration is coming out to be 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बाय चांस पहले वाला आंसर और अब वाला आंसर जो है आपका सेम आ गया है. पहले भी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड थी, अब भी आपकी एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है, राइट? अगर हम इस सिचुएशन का एक रफ ग्राफ स्केच करें, कौन सा ग्राफ? हियर वी विल स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट? नाउ द क्वांटिटी अलोंग y axis is velocity in meters per second and the quantity along x axis is time in seconds. At time is equal to 0, his velocity is 0, and at time is equal to 3 seconds, he is reaching the velocity of 12 meters per second. यहाँ पे पॉइंट प्लेस करेंगे, ग्राफ को स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसका ब्रेक डाउन देता हूँ. द ब्रेक डाउन ऑफ वेलोसिटी इज सच दैट हम एक टेबल बना के शो करते हैं. इस टेबल में एक कॉलम में आप टाइम लिख लेंगे, टाइम इन सेकेंड्स, और दूसरे कॉलम में वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड लिख लेंगे. सो टाइम इज 0, 1, 2, 3 and velocity initially is 0, then its velocity is increasing to 4 meters per second,
then it is 8 meters per second, and final velocity is 12 meters per second. This is initial velocity, this is final velocity. Initial velocity is represented by symbol u and final velocity is represented by symbol v, right? अच्छा, हमने जब इसका आंसर फॉर्मूला से फाइंड आउट किया तो फॉर्मूला से इसका आंसर आ रहा था 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. आप डायग्राम से देख सकते हैं कि एवरी नेक्स्ट सेकेंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय द फैक्टर ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड. ये भी 4 मीटर्स पर सेकेंड का इंक्रीज, ये भी 4 मीटर्स पर सेकेंड का इंक्रीज, और ये लास्ट इंक्रीज भी 4 मीटर्स पर सेकेंड का इंक्रीज. इसका मतलब ये है एवरी सेकेंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय द फैक्टर ऑफ 4 meters per second. That's why his acceleration is 4 meters per second square, right? Okay, the gradient of velocity time graph will also give you the value of acceleration. Gradient will also give you the value of acceleration because gradient is also showing change in velocity with respect to time. Y axis से change in velocity आ रही है, x axis से time आ रहा है. तो कोई भी दो points ले लें, one point is 0 and 0, the other point is 3 and 12. अगर आप इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए भी ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, आपका ग्रेडियंट जो आएगा वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, एंड एक्सेलरेशन इन दिस केस इज 4 meters per second square, राइट? अच्छा, दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है. तो जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन, कौन सी एक्सेलरेशन है? इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट? बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता. कार जब एक्सेलरेट करती है, हो सकता है कि शुरू में स्पीड ज्यादा इंक्रीज हो रही हो और बाद में कम इंक्रीज हो रही हो, या शुरू में ग्रेजुअली इंक्रीज हो लेकिन बाद में एकदम से स्विफ्टली स्पीड इंक्रीज हो. दैट विल बी द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. दैट विल बी द केस ऑफ non-uniform acceleration. Now let's look at this case of non-uniform acceleration. So you will write the heading of non-uniform acceleration. Right? Here we have a case in which the time is varying from 0 to 5 seconds. We have object A and we have object B. The velocity of both the objects is 0 initially and the final velocity is also same, and that is 15 meters per second. Now what is happening कि दोनों की velocity increase कर रही है, but जो increase का trend है वो दोनों का different है. For example, first object A है, उसकी velocity first second में increase हुई है by factor of 1 meters per second. Then velocity is increased by the factor of 2 meters per second. Then velocity is increased by 3 meters per second और 4 meters per second, और उसके बाद जो increase in velocity आ रहा है वो 5 meters per second का increase आ रहा है. इसका मतलब ये है कार accelerate कर रही है लेकिन non uniformly. शुरू में increase in speed was gradual, but then the speed में जो increase आया that was quick. Similarly, here the speed is increased by the factor of 5, but here that factor is reduced to 4. इसका मतलब ये नहीं है कि कार की ऑब्जेक्ट की स्पीड रिड्यूस हो रही है. इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है बट विद डिक्रीजिंग रेट, राइट? उसके बाद स्पीड में इंक्रीज आया 3 meters per second का, 2 meters per second का, और फाइनली देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1 meter per second. Now you have to represent all of this information on the given graph. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट A का ग्राफ स्केच करेंगे. ऑब्जेक्ट A के लिए आप देख सकते हैं कि 0 पर the speed is 0. At t is equal to 1, speed is increased to 1 meter per second. At t is equal to 2, speed is 3 meters per second. At t is equal to 3, speed is 6 meters per second. Then speed is 10 meters per second. And finally, the speed is 15 meters per second. Right? Now, how you will join all of these points? अगर आप रूलर की हेल्प से ज्वाइन करना चाहे तो रूलर से आप इन पॉइंट्स को somehow ज्वाइन नहीं कर सकते. So to join these graph points, you have to draw a smooth curve passing from almost all the points. Right? So keep in mind that this is a graph for object A and this is case of ग्रेडियंट का ट्रेंड देखें. शुरू में लाइन लेस स्टीप है और बाद में लाइन मोर स्टीप है. शुरू में इंक्रीज इन स्पीड कम का था और बाद में जो इंक्रीज आया है वो ज्यादा फैक्टर से इंक्रीज आ रहा है.
So is it a case of increasing acceleration or decreasing acceleration? As the gradient, as the steepness of graph is increasing, this is case of increasing acceleration. Increasing acceleration. Now, on the same graph, let's represent the information of velocity and time of object B. For object B, the speed initially is 0. After 1 second, the speed has increased to 5 meters per second. Then speed is 9 meters per second. Then at t is equal to 3, speed is 12 meters per second. Then the value is 14 meters per second. And finally, this value is 15 meters per second. Right? Once again, we have to join all of these points with the help of smooth curve. This graph will look like this. आपको भी ऐसी कर्व ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए. सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट बी, जिसमें आप देख रहे हैं कि ग्राफ की स्टीपनेस, ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है. सो दिस इज केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. This is case of decreasing acceleration, right? But none of them is deceleration. अभी तक deceleration start नहीं हुई. Students generally इस ग्राफ B को deceleration कह देते हैं. This is not at all deceleration because the speed of object is increasing and velocity time graph is rising, right? Deceleration कब start होगी? डिसेलरेशन तब स्टार्ट होगी जब ऑब्जेक्ट की स्पीड रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड deceleration. So we will write about deceleration now. So you are writing deceleration. So एक ऑब्जेक्ट या कार डिसेलरेट कब करती है? जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, और ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार की स्पीड स्टार्ट्स टू रिड्यूस. So deceleration is decrease in velocity per unit time. Decrease in velocity per unit time. इसका मतलब ये है कि अब कार की स्पीड कम और ज़्यादा कम होती रहेगी, right? So if the initial speed of car is, let's say, 12 meters per second and final speed is 0, that ultimately it is coming to rest, let's say, in 4 seconds. Time is 4 seconds. What will be the value of deceleration? तो deceleration के लिए भी जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ही होगा. The formula of acceleration is same, which is v minus u over t. Substitute the values here. The final velocity is 0, initial velocity is 12 divided by 4. This value is coming out to be minus 3 meters per second square. याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट डिसेलरेट करेगा, जब भी डिसेलरेशन होगी, आपके साथ एक्सेलरेशन के फाइनल आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा. लेकिन जब आप लिखेंगे डिसेलरेशन, तब आप लिखेंगे 3 meters per second square. वाई? डिसेलरेशन के साथ माइनस साइन क्यों नहीं लगाना? बिकॉज डिसेलरेशन का बाय डिफॉल्ट मतलब ये है कि कार की स्पीड रिड्यूस हो रही है. ठीक है, अगर ब्रेक्स का एक कॉम्प्लेक्स नाम मैंने रखना होता तो मैं डिसेलरेटर रखता. ठीक है, स्पीड वाले जो होता है वो एक्सेलरेटर होता है, जो ब्रेक्स होती मैं कहता दैट इज डिसेलरेटर. व्हाई? बिकॉज दैट स्लोज डाउन द कार, बिकॉज दैट डिसेलरेट्स द कार. बट अ बिट सिंपलर नेम इज ब्रेक्स. ब्रेक्स क्या करती हैं? ब्रेक्स कार को डिसेलरेट करती हैं, कार को स्लो डाउन करती हैं. सो अगर मुझे यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ स्केच करना है तो वंस अगेन द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस इज velocity or speed and the quantity along x axis is time in seconds. So velocity in meters per second and time in seconds, right? So initially the speed is 12 meters per second. The speed is reducing to 0 in how much time? In 4 seconds. So here is the velocity time graph of the object which is decelerating. Is it a falling line or a rising line? This is a
फॉलिंग लाइन, और फॉलिंग लाइन का ग्रेडियंट कैसा होता है? फॉलिंग लाइन हैज negative gradient. Falling line has negative gradient. And in fact, when you will find out the value of gradient of this graph, this gradient is coming out to be minus 3 meters per second square. कैसे? Let's find the value of gradient. This is 4 and 0 and this coordinate is 0 and 12. किसी एक coordinate को x1, y1 कह दें और किसी एक coordinate को x2, y2 कह दें. Right? So to find out the value of gradient of this graph, you will write y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Value substitute करेंगे, you will write 0 minus 12 divided by 4 minus 0. From here the gradient is coming out to be minus 3 meters per second square. So once again we can say that deceleration is minus, deceleration के साथ minus sign लगाने की जरूरत नहीं है. Deceleration is 3 meters per second square. And what is the distance traveled by the object during the time it is decelerating? You can find out the distance traveled by area under the graph, and this area is coming out to be 1 by 2 multiplied by 4 multiplied by 12, and that is 24 meters. Right? तो जो लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होगी उसकी एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा होगी, और फॉलिंग लाइन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी रिड्यूस कर रही है, इट इज decelerating. Now we have to see the trends of increasing deceleration and decreasing deceleration. So here I will sketch two velocity time graphs. The quantity along y-axis is once again velocity और x-axis के along time है. So here you have two graphs. One of them is this and the other one is this. अच्छा, जब भी ग्राफ x एक्सिस की तरफ आ रहा होता है तो इसका मतलब है उसकी स्पीड रिड्यूस होकर जीरो हो रही है. सो जब भी ग्राफ x एक्सिस की तरफ रिटर्न करेगा दैट विल बी द केस ऑफ डिसेलरेशन. ये वाला ग्राफ भी x एक्सिस की तरफ आ रहा था, दैट वाज द केस ऑफ डिसेलरेशन, और ये दोनों केसेस भी केसेस ऑफ डिसेलरेशन है. नाउ वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा इंक्रीजिंग डिसेलरेशन है और कौन सी डिक्रीजिंग डिसेलरेशन. राइट? सो फर्स्ट वाले में यहां पर स्टीपनेस कम है और बाद में स्टीपनेस ज्यादा है, और सेकंड ग्राफ में शुरू में स्टीपनेस ज्यादा है और बाद में स्टीपनेस कम है. सो द फर्स्ट वन इज केस ऑफ इंक्रीजिंग डिसेलरेशन बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग बट विद increasing rate. This is increasing deceleration and this is decreasing deceleration. Decreasing deceleration. Generally both of them are cases of non-uniform deceleration. ठीक है, जब भी आपका velocity time graph curve होगा, straight line नहीं होगा, that will be the case of non-uniform deceleration. So in this class we have studied the concept of acceleration and deceleration and the types of acceleration and deceleration, including increasing acceleration and decreasing acceleration, increasing deceleration and decreasing deceleration. So we have to learn more and more graphs and more concepts so we are able to attempt much difficult questions in easiest possible way. For then stay tuned. Thank you.